Hello guys, good evening. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. First of all, a little bit of introduction. Myself, Dr. Nidhi. I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I am teaching you all physiology. अगर NEET PG point of view से बात करें तो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है. On an average, 15 to 17 question come in our examination. Yeah, ये scoring subject है, so everybody clear the concept so that you can score in your examination and you will be able to achieve your target with good rank. This is our Telegram page. Let's crack NEET PG. Follow us out there. Out here, you will get the link of each and every classes. This is my page on Unacademy. unacademy.com/@kgmc. फॉलो कर लीजिए. फॉलो करने का बेनिफिट ये होगा कि भाई जब भी कोई क्लासेस होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. This is the code Dr. Nidhi. If you want to join any paid course, you can use this referral code to get additional 10% off. काफ़ी सारे पेड कोर्स नहीं है, काफ़ी सारे स्पेशल क्लास नहीं है. सो एनी टाइम यू कैन ज्वाइन एंड रिवाइज द टॉपिक. इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. ठीक है, दोज हु आर गिविंग एग्जामिनेशन दिस ईयर ओनली, दैट इज नीट पीजी 2022, should definitely go for this all India mock test. From this you can analyze your preparation. From this you can see how you are going to divide your time schedule to so that you can cover each and every questions. Amazing offer is going on. When you take subscription of 3 months, you will get additional 1 month free. Coming to the subscription, we have two type of subscription: plus subscription and iconic subscription. What's coming to the benefit of plus subscription? If you take plus subscription, you are able to access both live and recorded session. By chance, by chance अगर आपका कोई session miss हो जाता है तो आप recorded version देख सकते हैं. You have an opportunity to learn from India's top educator for the medical examination. We always conduct this live tests and live quizzes. From that, you can analyze your preparation at any point of time. You have a flexibility, you can study on the device of your choice. आपका फ़ोन हमेशा आपके साथ होता है, फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो. If you want to go for the bigger screen, you can go for the bigger screen also. We have a question bank which consists of 25,000 plus question है, high yield question है, clinical based question and with explanation है. So this is going to be very beneficial for all of you. Coming next is the iconic subscription, जहाँ पे आपको इंडिया के दो बेस्ट प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा. दैट इज अनअकैडमी एंड प्रेपलर. यानी अनअकैडमी के सारे प्लस बेनिफिट आपको मिल जाएंगे. लाइक आई सेड, लाइव क्लासेस, recorded classes, question bank, live tests, live quizzes and the PDF. Along with that, you get access for the prep ladder. In this, you can access the clinical and integrated essential of prep ladder, video lecture from Dream Team, question bank 3.0, rapid revision and snapshot, and you will also be provided with the treasure and dream notes. So if you want to access the prep ladder, also go for the iconic subscription, everybody. They are our FMG December 2021 toppers. अपकमिंग शेड्यूल है 14 फेब एंड 15 फेब की शेड्यूल्स इस तरह से. तो अपना टेस्ट आप दे सकते हो. शेड्यूल याद रख लीजिएगा. Special class feature, our special classes way more special from YouTube session. They are also free of cost, but they are way more special. How they are way more special? Because special class is always and always live. Live classes क्या होता है? Interactive sessions होते हैं. आप अपने एजुकेटर से लाइव 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हो. अपने लाइव सेशन में ही अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो. पोज के फीचर होते हैं. फ्रॉम दैट यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. रेज हैंड फीचर्स देयर. नाउ यू कैन टॉक टू योर एजुकेटर इन द लाइव सेशन. अगर किसी एजुकेटर को फॉलो करते हो तो उनकी क्लास से प्रायर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है. आफ्टर द लेक्चर यू कैन डाउनलोड द PDF एंड रिवाइज इट एनी टाइम एनीवेयर. We are started with this revision batch, all educator revision batch. 90 days इसकी ड्यूरेशन है. 11th 5th से स्टार्ट हो चुका है. 10th में तक ये बैच हमारा चलने वाला है, जिसमें 4 आवर पर डे रिवीजन होगा. टोटल 140 आवर रिवीजन क्लासेस होंगी. 8 ग्रैंड टेस्ट हो गए. दैट विल हेल्प यू टू कॉन्कर द नीट PG 2022. So if you are giving this NEET PG 2022, do enroll yourself for this batch. This batch is going to be very beneficial for all of you. ठीक है, अगर आपका टारगेट नीट PG 2022 है, डू एनरोल योरसेल्फ. फॉर एनरोलमेंट डू यूज द इनवाइट कोड, रेफरल कोड, दैट इज डॉक्टर निधि. इससे क्या होगी? आपकी फीस एडिशनल 10% ऑफ हो जाएगी. प्लस अब भाई ऑनगोइंग ऑफर है, 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के बाद आपको 1 मंथ फ्री मिल जाएगा. तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ. कुछ बैचेस जो और स्टार्ट हो चुकी हैं. फोकस FMG December 2022 कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस, टारगेट नेक्स्ट 2023 सब्जेक्ट वाइज बैचेस. चलो, subscription fee is somewhat like this. For plus 3 months
prices 11,250. For 6 months the prices 20,250. For 9 months the prices 22,500. For 1 year it is 24,750. For 18 months the fee is 29,250. For 2 year the fees is 36,000. For 36 months it is 45,000. And 48 month के लिए है 54,000 only. सेम गोइंग विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 6 मंथ की फीस है 36,000. 9 मंथ की फीस है 39,600. 1 ईयर की फीस है 43,200. 18 मंथ का फीस है 49,500. 2 ईयर की फीस है 54,000. 3 ईयर की फीस है 63,000 एंड 4 ईयर की फीस 70,200 पड़ेगी. ये आफ्टर द अप्लाइंग द रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर. ठीक है, अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. गिव मी 1 मिनट. चलो, we will continue the now physiology. First, coming to the classification of nerve. The most important classification of nerve is given by the Erlanger and Gasser. So this classification is important, Erlanger and Gasser classification. It is for both sensory fiber and the mixed fiber. On the presence and absence of myelin, ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन, हमारा जो नर्व फाइबर है उसको 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया हुआ है. ए टाइप, बी टाइप एंड सी टाइप. एंड दिस ए टाइप एंड बी टाइप इज माइलिनेटेड वन, while C type fiber is non-myelinated. ठीक है, फ्रॉम ए टू सी जब अब हम आते हैं तो बात करेंगे माइलिनेशन की. तो फ्रॉम ए टू सी माइलिनेशन डिक्रीजेज, यानी सबसे ज़्यादा माइलिन किस में होता है? ए फाइबर में. एंड सबसे लीस्ट किस में होता है? सी फाइबर में. डायमीटर डिक्रीजेज फ्रॉम ए टू सी, यानी सबसे लार्जेस्ट डायमीटर किसका है? ए फाइबर का. एंड सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर किसका है? सबसे लीस्ट डायमीटर किसका है? That is for the C fiber. Nerve conduction velocity also decreases. Since myelination is decreasing, diameter is decreasing, nerve conduction velocity will obviously decrease because conduction velocity is directly proportional to diameter. It is directly proportional to the presence of myelin. So nerve conduction velocity also decreases from A to C. Is this clear with everybody? Now coming to the characteristic of each and every nerve fiber. First is the A alpha fiber. A alpha fiber is the thickest one. It has maximum myelin, so the conduction velocity is also fastest, that is 120 meter per second. Now coming to the where this A alpha fiber exists. This A alpha fiber is responsible for proprioception, means joint position sensing और सेंसरी फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. एंड इट इज ड्यू टू ए अल्फा फाइबर, ऑलरेडी डिस्कस. मोटर फंक्शन भी है, सेंसरी फंक्शन के साथ साथ हमारा ए अल्फा फाइबर का मोटर फंक्शन भी है. अल्फा मोटर न्यूरॉन पढ़ा होगा आप लोगों ने. टू द मसल स्पिंडल इट हैज मोटर रोल. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट इज ए बीटा फाइबर. दिस इज प्योर सेंसरी. ए अल्फा फाइबर वॉज द मिक्स सेंसरी एज वेल एज मोटर फंक्शन, but it is purely sensory. A beta fiber is purely sensory. It is conveying the touch and pressure sensation. Next is the A gamma fiber. A gamma fiber is purely motor. The gamma motor neuron to the spindle is the A gamma fiber, which regulate the muscle tone and certain muscular reflexes. Next is the A delta fiber. Last A fiber, A delta fiber. A delta fiber is responsible for conduction of fast pain, first pain and sharp pain, and it is also responsible for temperature sensation. Do remember, the first pain, the fast pain, the sharp pain is conducted by A delta fiber. Next fiber after the A fiber, that is B fiber, which is also myelinated one, and it is present in preganglionic autonomic nerve fibers. Our preganglionic autonomic nerve fibers are B fibers. Next is the C fiber.
C fiber are the non-myelinated one. ठीक है, it is responsible for conduction of slow pain and second pain. ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स आर हमारा सी फाइबर. रिमेंबर द प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर वाज pre-ganglionic nerve fiber was A fiber, sorry B fiber, and post-ganglionic fibers are C fiber. ठीक है, slow pain is conducted by second pain, slow pain is conducted by C fiber. Fast pain, first pain is covered by A delta fiber. Is this clear with everybody? It is directly proportional to under root of diameter. Means हमारा माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या है, डायमीटर इंक्रीज होगा 6 टाइम हो जाएगा. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डायमीटर 4 टाइम्स करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 टाइम्स हो जाएगा. कंडक्शन वेलोसिटी 24 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. बट इन अनमाइलिनेटेड 5 टाइम्स, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में 2 टाइम्स होगा. सो दिस इज द डिफरेंस. दोनों में हमारा डायमीटर इंक्रीज करेंगे, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज होगा. बट माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या हुआ, बहुत फास्ट इंक्रीज हुआ. इट इज प्रोपोर्शनल टू 6 टाइम्स टू द डायमीटर. इज दिस क्लियर विद एवरीबडी? Everyone, is this clear? So this is the important chart also, जिससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं. सबसे स्लोएस्ट किसका है, सी फाइबर का है, तो इसमें स्पाइक आने में टाइम लगेगा. सो स्पाइक ड्यूरेशन इज मोर फॉर सी देन बी देन ए. प्रेशर इंजरी सबसे ज्यादा डायमीटर किसकी है, ए फाइबर की है. तो प्रेशर इंजरी के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल ए फाइबर, देन बी फाइबर, देन सी. हाइपोक्सिया ससेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बी फाइबर, देन ए फाइबर, देन सी फाइबर. लोकल एनेस्थीसिया ससेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ए फाइबर, देन बी फाइबर, देन सी फाइबर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट चार्ट, डू रिमेंबर एवरीबडी. चलो, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आफ्टर Erlanger classification is lowered hand classification or numerical classification. This is for only and only sensory fiber, not for the motor fiber. ठीक है, डू रिमेंबर दिस इज फॉर द ओनली एंड ओनली सेंसरी फाइबर. लोअर हैंड क्लासिफिकेशन क्या है, हमारा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. टाइप 1 में आता है हमारा ए अल्फा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोप्रियोसेप्शन. सिर्फ यही वाला आया. अल्फा मोटर न्यूरॉन भी था ना, उसको इसमें क्लासिफाइड नहीं करते. ए बीटा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच एंड प्रेशर, वो आ जाएगा, प्योरली सेंसरी था. ठीक है, नेक्स्ट इज ए डेल्टा फाइबर. ए गामा फाइबर प्योरली मोटर था, इसको क्लासिफिकेशन में हमने इंक्लूड नहीं किया है. ए डेल्टा फाइबर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट पेन, इज क्लासिफाइड इनटू टाइप 3 कैटेगरी. टाइप 4 में आ जाएगा हमारा सी फाइबर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड पेन. सो दिस इज द लोअर हैंड क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन. इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी? नेक्स्ट नाउ कमिंग टू द नर्व इंजरी. इंट्रोडक्शन पे आते हैं. तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नर्व इंजरी क्या होती है, बोन फ्रैक्चर. और कौन सा पार्ट न्यूरॉन का सबसे ज्यादा इंजर्ड होता है, दैट इज एक्सॉन. तो जब भी नर्व इंजरी होगी, 2 प्रोसेस विल बी देयर. फर्स्ट इज डीजेनरेटिव चेंजेस, देन द रीजेनरेटिव चेंजेस विल बी देयर. सो डीजेनरेटिव चेंजेस होगा, रीजेनरेटिव चेंजेस होगा. अब आ जाते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस पे. तो दैट ऑल्सो अकर विद द टाइम. फर्स्ट विद इन 24 आवर इंजरी में क्या क्या डीजेनरेटिव चेंज होगा. तो अर्लीस्ट चेंज है ये. इसमें क्या क्या चेंज होगा, डिस्टल डीजेनरेशन विल बी देयर, वेलेरियन डीजेनरेशन विल बी देयर. ठीक है, यहाँ पे माइलिन शीट भी डीजेनरेट होगी, और जो भी डेब्रेस होगा उसके लिए फैगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा. तो दिस इज विद इन 24 आवर इंजरी. अर्लीस्ट चेंज हो गया, डिस्टल पार्ट डीजेनरेट होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज वेलेरियन डीजेनरेशन. माइलिन शीट डीजेनरेट होगी, डेब्रिस जो भी एक्यूमुलेट है उसकी फैगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी.
डिस्टल पार्ट किसको कहेंगे, प्रॉक्सिमल पार्ट किसको कहेंगे. सपोज दिस इज आवर न्यूरॉन, सेल बॉडी एंड एक्सॉन. तो ये पार्ट अगर इंजरी पार्ट है तो टुवर्ड्स सेल पार्ट, सेल बॉडी पार्ट, ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया. टुवर्ड्स साइनेप्टिक पार्ट हमारा डिस्टल पार्ट हो जाता है. तो डिस्टल पार्ट डिजेनरेशन को वेलेरियन डिजेनरेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट इज विद इन 24 आवर कंप्लीट कर लिया हमने. और आफ्टर 36 आवर इंजरी क्या क्या न्यूरॉन में डिजेनरेटिव चेंजेस होता है. तो अब हमारा प्रॉक्सिमल सेगमेंट डिजेनरेट होना शुरू होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज रेट्रोग्रेड डिजेनरेशन. न्यूक्लियस विल बी पुश टुवर्ड पेरिफेरी. जो भी न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में पुश हो जाएगा. Nissls granule is destroyed, which is known as chromatolysis. So Nissls granule basically यहाँ present होता है, उसकी destruction start हो जाएगी. That is known as chromatolysis. See, this is the diagram. This is a site of injury. ठीक है, तो हमारा ये पार्ट क्या हो गया, proximal part. ये हो गया हमारा distal part. तो within 24 hours इंजरी क्या होगा, distal part degenerate होना शुरू होगा, which is known as orthograde or Valerian degeneration. माइलिन शीट डिजेनरेट होनी शुरू होगी. ठीक, उसके बाद 36 आवर के बाद क्या होगा, आफ्टर 36 आवर हमारा जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो डिजेनरेट होना शुरू होगा. रेट्रोग्रेड डिजेनरेशन विल स्टार्ट. ठीक, न्यूक्लियस विल बी पुश टुवर्ड पेरिफेरी. Nissls granule will be destroyed, which is known as chromatolysis will be seen. So these are important degenerative changes occurring within 36 hours. सेम थिंग इज देयर. साइट ऑफ डैमेज ये, तो हमारा ऑर्थोग्रेड डिजेनरेशन होगा. माइलिन शीट डिजेनरेट होगी, माइलिन डेब्रिस विल बी देयर. सो उसको फैगोसाइट करने के लिए माइक्रोग्लाया सेल्स, मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेट होंगे. ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट में डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा. न्यूक्लियस विल बी पुश टुवर्ड पेरिफेरी. क्रोमैटोलिसिस विल बी सीन. So these are important degenerative changes. Now the regeneration will start. आफ्टर 90 आवर्स ऑफ इंजरी हमारा रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड रीजनरेशन की जो स्पीड है दैट इज 1 to 3 mm पर डे. ठीक है, और जो भी नर्व इंजर्ड होगा उसमें अगर रीजनरेशन हो रहा होगा तो ऑन टैपिंग देयर विल बी tingling sensation. This tingling sensation indicate that our nerve is undergoing regeneration. So this is known as positive tinnial sign. यानी रीजनरेटिंग न्यूरॉन जो भी होंगे, जो भी नर्व फाइबर रीजनरेट हो रहा होगा वो पॉजिटिव टीनियल साइन शो करेगा. व्हाट इज पॉजिटिव टीनियल साइन? ऑन टैपिंग इंजर्ड नर्व हमें टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगा. इज दिस क्लियर अबाउट रीजनरेशन एवरीबडी? सेम थिंग इज आउट है. ट्रांसैक्शन ऑफ न्यूरॉन यहाँ है, हमारा डिस्टल पार्ट डीजनरेट होगा, मैक्रोफेजेस आएंगे टू इन्फिल्ट्रेट. ठीक है, फिर स्वान सेल आएगा, फिर रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा. अब आ जाते हैं नर्व इंजरी की प्रोग्नोसिस. तो बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है रेडियल नर्व इंजरी की एंड वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी की. अब आ जाते हैं सिडन क्लासिफिकेशन. नर्व इंजरी को क्लासिफाइड किया है बाय द सिडन क्लासिफिकेशन. First is the grade 1 injury which is known as neuropraxia. It is only and only compression in injury. यहाँ पे क्या हुआ, नर्व सिर्फ और सिर्फ कंप्रेस हुआ. एक्सॉन इंटैक्ट रहेगा. लोकल नर्व कंप्रेशन इंजरी है, एक्सॉन इंटैक्ट है, सिर्फ लोकल साइड पे माइलिन इंजर्ड होगा. तो इसकी प्रोग्नोसिस क्या हो जाएगी, सबसे बेस्ट हो जाएगी, रिकवरी सबसे फास्ट हो जाएगी. दैट इज 6 to 8 वीक में ये रिकवर कर जाएगा न्यूरोप्रेक्सिया. नेक्स्ट इज एक्सॉन्टमेसिस, ग्रेड 2 इंजरी. वो नर्व कंप्रेशन इंजरी था, ये नर्व क्रैश इंजरी है. इसमें एक्सॉन और माइलिन दोनों ही इंटरप्टेड होंगी एंड इसकी रिकवरी थोड़ा सा उससे लेट होगी. वो 6 to 8 वीक में रिकवर हो रहा था, ये वीक्स टू मंथ जाएगा. Next is the grade 3 injury which is known as neurotomesis. It is the complete nerve transaction. And जब भी complete nerve transaction होगा, recovery will be always and always imperfect. Is this clear with everybody? So we have neuropraxia, that is nerve compression injury. We have exontomesis, which is nerve crash injury.
And the last one, that is neurotomesis, that is complete nerve transaction is there. Is this clear with everybody? किसी को अभी तक सेशन में कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, एनीवन? समझ में आया सिडेंस क्लासिफिकेशन? नर्व कंप्रेशन, नर्व क्रश, ठीक है. देन लास्ट वन इज कंप्लीट नर्व ट्रांजैक्शन. इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी? किसी को भी कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, एनीवन? चलो फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं. दिस इज द डायग्राम. दिस इज आवर नॉर्मल न्यूरॉन nerve fiber. First is neuropraxia, then we have grade 2 injury, exontomesis, and the last one is neurotomesis. Neuropraxia is grade 1 injury. Exontomesis is grade 2. And neurotomesis is grade 3. So neuropraxia is nerve compression injury. ठीक है. Exontomesis is nerve crush injury. Neurotomesis is complete nerve transaction. This is clear with everybody? अच्छा. Next, coming to the Sunderland classification. First degree nerve injury is neuropraxia. Second degree is exontomesis. Third degree is exontomesis plus endoneurium disruption. Fourth degree is exontomesis plus endoneurium and the perineurium disruption. And the last one, that is neurotomesis. So this is Sunderland classification. First degree is neuropraxia. Second degree is exontomesis. Third degree is exontomesis plus endoneurium disruption. Fourth degree is exontomesis plus endoneurium and perineurium disruption. And fifth degree is neurotomesis. This is Sunderland classification. So we have Sunderland classification and Sunderland classification for different type of nerve injury. Now coming to the neurotrophin. Recent paper में neurotrophin पे काफ़ी questions आ रहे, तो do remember each and every points. Neurotrophin क्या है? That is required for the survival and the growth of neuron. इसीलिए इसको हम nerve growth factor भी कहते हैं. कहाँ से प्रोड्यूस होता है? It is produced from the astrocyte. And neuron किस तरह से neurotrophin को लेता है? Via the endocytosis. So all these 4 points are important. It is required for growth and survival of neuron. So it is known as nerve growth factor. It is released by astrocyte and it is taken by the neuron via endocytosis. So different type of neurotrophins are there. Nerve growth factor, NGF, brain derived neurotrophic factor, neurotrophin 3, neurotrophin 4 and 5. Other neurotrophin की अगर बात करेंगे तो ciliary neurotrophic factor, glial cell line derived neurotrophic factor. So these are important neurotrophins. अब आ जाते हैं कहाँ ये responsible है. Nerve growth factor is responsible for growth of sympathetic neuron and cholinergic neuron in basal forebrain. Brain derived neurotrophic factor is responsible for growth of vestibular ganglia and the peripheral sympathetic neuron. Neurotrophin 3 is responsible for proprioceptive neuron to the muscle spindle and the mechanoreceptor in the skin. Neurotrophin 4 and 5 is responsible for neuron innervating our hair follicles. ठीक है, तो याद रखिएगा दिस चार्ट इज इम्पॉर्टेंट. नर्व ग्रोथ फैक्टर कहाँ रिक्वायर्ड होता है? सिंपैथेटिक न्यूरॉन एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन के ग्रोथ के लिए. ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है? वेस्टिबुलर गैंग्लिया एंड द पेरिफेरल सिंपैथेटिक न्यूरॉन के लिए. न्यूरोट्रॉफिन 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर proprioceptive neuron to the muscle spindle and the mechanoreceptor on the skin. Neurotrophin 4 and 5 is responsible for neuron innervating our
hair follicle. Is this clear with everybody? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पार्ट पे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. नर्व फाइबर इन्वॉल्व इन proprioception is type A fiber, type B fiber, type C fiber, type 4 fiber or the J fiber. Nerve fiber involved in proprioception is, everybody answer this question. Nerve fiber involved in proprioception is do reply fast, everybody. The nerve fiber that is responsible for proprioception is A alpha fiber. So type A fiber is responsible for proprioception. Coming to the next, that is efferent neuron for the skeletal muscle is alpha motor neuron, gamma motor neuron, A alpha, A beta. Efferent neuron for skeletal muscle. Everybody answer this question. Efferent neuron for skeletal muscle is gamma motor neuron. Very true. Coming to the next one. Group B nerve fiber are situated in muscle spindle, fiber carrying pain sensation, preganglionic autonomic fiber, postganglionic autonomic fibers. Group B nerve fiber are situated in Group B nerve fiber are situated in, it is responsible for preganglionic autonomic fibers are group B fiber. Coming to the next, the order of susceptibility of different type of neurons to the LA is B, C, then A, B, then C, C, B, C, then A and B, C, B, A. Chalo, everybody answer this question. The correct order of susceptibility of different type of nerve fiber to LA is
करेक्ट ऑर्डर ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू एल इज सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल ए फाइव होता है, देन बी फाइबर, देन कम सी फाइबर. ग्रुप ए नर्व फाइबर द मोस्ट ससेप्टेबल टू प्रेशर, hypoxia, LA, temperature. Group A nerve fiber is most susceptible to most susceptible to both pressure and LA. Coming to the next one, the slowest conducting fiber is preganglionic autonomic fiber, postganglionic sympathetic fiber, somatic motor, or the proprioception. Slowest conducting fiber is, everybody answer this question, slowest conducting fiber is, do reply fast everybody. Slowest conducting fiber is slowest कौन सा होता है, type C fiber, and type C fiber is post ganglionic fiber, type C fiber. Coming to the next, the afferent fiber which is most sensitive to LA belongs to which group, A, B, C, or D? The afferent fiber which is most sensitive to LA is the afferent fiber which is most sensitive to LA belongs to group A. Coming to the next one, which one of your nerve is compressed as this lead to paresthesia for some time? The type of nerve fiber affected is probably, everybody answer this question.
प्रेशर इंजरी के लिए सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल कौन होगा, जिसकी डायमीटर सबसे ज़्यादा होगी. सो द मोस्ट प्रोबेबल द अफेक्टेड नर्व इज ए अल्फा. Coming to the next one. Conduction in which type of nerve fiber is blocked maximally by pressure? Everybody answer this question. सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट. मैक्सिमली प्रेशर से कौन सा ब्लॉक होगा, सबसे ज्यादा इसकी डायमीटर होगी. सो ए अल्फा फाइबर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. Which group of nerve fiber are least susceptible to LA? A alpha, A beta, B or C? To reply fast, everybody. Dr. Shahil, I don't have any idea regarding this. You have to search. Which group of nerve fiber is least susceptible? C fiber is least susceptible to LA. Coming to the next, a patient slept keeping his arm by his side. Now he developed tingling and numbness sensation over the arm. Which of the following fiber is affected most? C fiber, A delta fiber, B fiber or sympathetic fiber? Which fiber will be affected? हमारा A delta fiber, because इसकी diameter सबसे ज़्यादा है. That's why compression की chance सबसे ज़्यादा A delta fiber में. For joint position and vibration sensors is carried by A alpha, A beta, gamma or B fiber. Joint position and vibration sensors is carried by
Joint position and vibration sensors is carried by A alpha fiber is responsible for carrying these sensations. Coming to the next, A delta fiber is not involved in force pain, slow pain, fast pain, or epicryptic pain. A delta fiber are not involved in A delta fiber are not involved in. They are involved in force pain, fast pain, and the epicryptic pain. Slow pain is carried by C fiber. So answer is C fiber. Slow pain. Which of the following carries fast pain? A delta, A beta, A alpha, or C fiber? Which of the following carries fast pain? Which of the following carries fast pain? Fast pain is carried by A delta fiber. We just discussed together. Coming to the next one, the nerve conduction is slowest in C fiber, A alpha, A beta, or A delta. Nerve conduction is slowest in. Everybody answer this question. Nerve conduction is slowest in. Nerve conduction is slowest in. It is slowest in C fiber. Smallest diameter होता है, myelin sheath भी absent होता है, that's why conduction is slowest. Coming to the next, fastest conduction is for cold, pain, proprioception, or pressure.
फास्टेस्ट कंजर्वेशन किसका होता है? ए अल्फा फाइबर। ए अल्फा फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोप्रियोसेप्शन, और प्रोप्रियोसेप्शन का कंडक्शन क्या हो जाएगा? सबसे फास्ट। कमिंग टू नेक्स्ट वन, नोशियोसेप्शन फ्रॉम एब्डोमेन इज ट्रांसमिटेड बाय ए गामा, ए अल्फा, सी फाइबर और बी फाइबर। Nociception from abdomen is transmitted by nociception from abdomen is transmitted by abdominal pain. Any visceral pain is a second pain or slow pain. So answer is C. Coming to the next one, sensory fiber least susceptible to hypoxia is type 1, type 2, type 3 or type 4. Least susceptible to hypoxia is sensory fiber least susceptible to hypoxia is हमारा टाइप सी फाइबर सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल, बी देन ए देन सी, एंड सी फाइबर कौन सा फाइबर होता है? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में, लॉयड हैंड क्लासिफिकेशन में इट इज टाइप 4 फाइबर. सो आंसर इज डी. Coming to the next one, the fiber which is thickest in human nerve is touch, pain, temperature or proprioception. The fiber which is thickest in human nerve is the fiber which is thickest in human nerve is thickest fiber is A alpha fiber, that is carrying the proprioception. So answer is D. Coming to the next one, which of the following about sensory fiber is not true? One is A alpha, 2 is A beta, 3 is A gamma, or 4 is C fiber. Which of the following is not true?
Which of the following about sensory fiber is not true? आंसर इज सी. हमारा जो टाइप 3 फाइबर है दैट इज नॉट ए अल्फा, दैट इज ए गामा. ठीक है, सॉरी, दैट इज नॉट ए गामा, दैट इज ए डेल्टा फाइबर. This is clear. Coming to the next one, exontemesis include discontinuity in perineurium, epineurium, endoneurium, axon, and myelin sheath. Exontemesis include discontinuity in exontemesis include discontinuity in both. एक्सॉन्टोमेसिस में एक्सॉन और मैलिन शीथ दोनों ही इंटरप्टेड होता है. सो आंसर इज डी एंड ई. कमिंग टू द नेक्स्ट, बेस्ट प्रोग्नोसिस ऑफ नर्व इंजरी इज फॉर न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सॉन्टोमेसिस, न्यूरोटोमेसिस और कंप्लीट ट्रांसैक्शन. सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस किसकी होती है? बेस्ट प्रोग्नोसिस इन नर्व इंजरी इज फॉर न्यूरोप्रैक्सिया. इसमें सिर्फ नर्व कंप्रेस होता है तो इसमें रिकवरी फास्ट है. All are true about neurotrophin except it help in integrity of postsynaptic neuron. Tyrosine kinase B is associated with brain-derived neurotrophic factor. Help in growth of cholinergic neuron in basal forebrain. Always transported anterograde along the axon. All are true about neurotrophin except all are true about neurotrophin except neurotrophin is transported in both directions. So answer is B. It is not only transported in anterograde direction, it is transported in both direction. Coming to the next, receptor for brain derived neurotrophic factor is tyrosine kinase A, tyrosine kinase B, tyrosine kinase C or none.
receptor for brain derived neurotransmitter factor is TRKB. ठीक है, do remember tropomyosin related kinase A is for nerve growth factor, neurotrophin 6 and 7, neurotrophin 3, brain derived neurotrophic factor required TRKB. Coming to the next one. Okay, that was the last question of today's session. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. एनीवन? आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? Hope you all like the session. If you like the session, do like and share. जितना ज़्यादा शेयर करोगे क्लास होती है, इंटरैक्टिव होती है. So do share everybody. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. Our channel is Let's Crack NEET PG and press the bell icon so that you will get notification of every class and you won't miss a single class. रेगुलर मेहनत करते रहिए. यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट. सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर. जितने ज़्यादा एमसीक्यू कीजिएगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी टू क्रैक योर एग्जाम इंक्रीजेस. सो डू मोर एंड मोर एमसीक्यू. यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट विद गुड ट्रैक. This is the code to Dr.Nidhi. If you want to join any paid course, you can use this referral code to get additional 10% off. This referral code is valid for each and every examination. So any friend of yours or any family member of yours, if they are willing to take an Unacademy subscription, they can also use this code to get additional 10% off. And that's all for today. Thank you so much for joining. See you in the next session. Bye bye everyone.